very basic questions from the first class, part of the uterus. Anyone? If you can't speak, you can write in chat box also. Uterus divided into broadly how many parts and name? It's a very basic question. Today I'll not take the name. Everyone must write the answer. I think 2 parts or 3 parts. यूट्रस कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? अभी तक एक भी आंसर नहीं आया. एटलीस्ट इतना तो लिख दो कि कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है. Am I audible? मेरी आवाज आ रही है? Ma'am, yes, very much audible. So no answers. ये तो फर्स्ट क्लास से हम लोग करते आ रहे. वेरी बेसिक क्वेश्चन. It's mainly divided into 2 parts. कुछ हमने बात की थी. बॉडी. Anyone remember it? Ma'am, yes. कुछ याद आ रहा है? And Cord, cervix. yes, and the connecting part is isthmus. आप लोग इतने बेसिक क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे तो आगे बढ़ने का हमारा फिर अब आप सब प्रोफेशनल कोर्स में आए हैं तो यू शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योरसेल्फ ना. जस्ट गो थ्रू एक एक पार्ट करके ही आप अगर करोगे रिवीजन तो 10 मिनट्स लगेगा और 7-8 टॉपिक से ज्यादा हमारे नहीं हुए हैं. तो 7 डेज में सिर्फ एक सब्जेक्ट को आप 10 मिनट्स तो दे ही सकते हो. जितना भी बिजी हो आप लोग काम कर रहे हो. बट इफ यू आर डूइंग एनी प्रोफेशनल कोर्स तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो प्लीज गो थ्रू इट. अब इसके आगे मैं क्या पूछूं जब ये आंसर ही मुझे नहीं मिला. बट आई होप answers and I expect answer from everyone in the next class for each and every question. So please do remember and start preparing for the next class. So अभी जब इतने बेसिक क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया तो कोई नीड ही नहीं है फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस आगे क्या करूं मैं. या मैं ही इतना बुरा पढ़ा रही हूँ कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है. तो लास्ट टाइम मैटरनल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यहाँ पे थे और हमने इसकी कुछ स्लाइड्स देखी भी थी. सो फर्स्ट स्लाइड से ही हम लोग रिवाइज करते हुए आगे चलते हैं. जस्ट अ मिनट. यूट्रस में चेंजेस. वॉल्यूम बढ़ता है फ्रॉम 10 ml to 5 liters. Normal shape of uterus is pyriform, especially of body. It changes to globular. Globular is a spherical kind of globe जैसा होता है. Fundal level rises from 7.5 centimeters to 35 centimeters. These are basic changes in dimensions, size and shape. Now to the lower uterine segment. ये हम लोग साइंस पहले भी पढ़ चुके हैं. साइंस में भी पढ़े हैं. फिजियोलॉजिकल चेंजेस है उसमें फिर से पढ़ेंगे. ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन. दीज कम्स अंडर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी आल्सो. तो नाम से ही कैसा ये कुछ एसिमेट्रिकल सा लग रहा है. ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन. तो ये एसिमेट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन है. इरेगुलर कोई रिदम नहीं बैठी इस नाम की. तो इरेगुलर है, स्पोरेडिक एंड पेनलेस. ये नॉर्मल है तो ये पेनलेस ही होंगे. कॉन्ट्रैक्शन नॉर्मल साइन में है और इसका प्रेशर भी लो रहता है और 30 सेकेंड्स के लिए ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं फिर डिसअपीयर हो जाते हैं. ये भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस में है. नाउ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में सर्विक्स एंड वुल्वा. प्रीवियस क्लासेस में भी हम लोग ने पढ़ा था साइंस एंड सिम्टम्स में. चैडविक साइन. कंजेशन ऑफ पेल्विक वेस्कुलेचर. इसमें वेसल्स में कंजेशन पर्पल टाइप का कलर दिखेगा. ल्यूकोरिया, that is vaginal discharge is increased, which is rich in glucose, lactic acid and
low vaginal pH. That means it goes towards acidic. Ovaries are slightly enlarged. Corpus luteum regresses after 10 weeks of gestation. Till 10 weeks, it increased in size. After that, start regression. Breast signs, circulation is increased. In most of the parts, circulation is increased, and overall circulation is also increased. Engorgement and venous prominence. Mastodynia, that is breast tenderness. Montgomery tubercles appears, that is enlargement of circumlateral sebaceous gland. जो sebaceous gland होती है उसका enlargement हो जाता है, तो that is termed as Montgomery tubercles. Colostrum secretion in later months of pregnancy. Montgomery tubercles are non-pigmented nodules around the areola. In second month, it's enlarged sebaceous gland or rudimentary lactiferous gland. तो जो sebaceous gland होती है वो enlarged होके nodule form हो जाता है. 12 से 20 होते हैं around the areola. Cardiovascular changes. हार्ट थोड़ा अपर साइड में लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है, पोजीशन हो गई, एंड साइज ऑफ द हार्ट इज आल्सो इंक्रीज्ड. ईसीजी, that is increased heart rate about 15% and 15-degree left axis deviation of ECG. Now cardiovascular changes. Due to the growing size of fetus and uterus, inferior vena cava is compressed, and this is also known as inferior vena cava syndrome because it results in many changes. Cardiovascular changes, so stroke volume, हार्ट को काम ज्यादा करना है, पंप ज्यादा करना है. Various physiological changes are there, needs are increased, so stroke volume is also increased by 30%. Heart rate is increased by 15%. Cardiac output 40% raised. Oxygen consumption due to increased need, it's by 20% raised. Systemic vascular resistance is decreased by 5%. Systolic blood pressure by 10 mmHg and diastolic blood pressure by 15 mmHg reduced, and mean blood pressure is reduced by 15 mmHg. Now come to the cardiovascular changes. Blood volume raised by 30% and plasma volume raised by 40%. Okay, तो सबका अलग है, और रेड ब्लड सेल का 20% रेज्ड हो जाता है. तो टोटल ब्लड वॉल्यूम 30% बढ़ता है. ब्लड का आप लोग जानते हो कि इसमें प्लाज्मा होता है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स. तो रेड ब्लड सेल्स 20% बढ़ती है, प्लाज्मा 40%. Delusional anemia, increased cardiac output, decreased blood viscosity, vasodilation, all these are the changes to CVS. Now venous pressure, blood flow significant increases in the lower extremities, especially during the supine or sitting or standing position. आपने सुना होगा प्रेग्नेंट लेडीज जनरली कंप्लेन करती हैं कि पैरों में सूजन आना. सो दिस इज ड्यू टू द वेनस प्रेशर. और फुट एंड रेस करके उनको एडवाइस किया जाता है कि आप सुपाइन पोजीशन में होना, लेफ्ट लेटरल पोजीशन में रहना. रिटर्न्स टू द नियर नॉर्मल इन लेटरल रिकम्बेंट पोजीशन. Now changes in the urinary system, GFR is increased, size also, and ureters also change. As we go through it earlier also, that's urge to urine or micturition is increased in the first trimester and later weeks of pregnancy. So here the position of uterus and the fetus, or you can say bladder, which compresses in the early months. Later it becomes the abdominal part, so urge to micturition again becomes normal, and in the later weeks, due to the engagement, once again the pressure in the bladder raised, so urge to micturition raised. Kidney is slightly enlarged. Renal plasma flow is increased by 35% and glomerular filtration raised by 50%. अब GFR बढ़ जाएगा तो क्लियरेंस तेज होगा, तो क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड एंड यूरिया नाइट्रोजन लेवल्स कम हो जाएंगे. रेनिन, एंजियोटेंसिन 1 and 2 and renin substrates are raised. ये भी एक कॉज है ब्लड प्रेशर बढ़ने का, सो कॉल्ड प्री एक्लैम्पसिया एंड एक्लैम्पसिया.
टर्म्स आपने सुने होंगे नहीं तो आगे आएंगे. Due to raised renin, angiotensin 1, 2 and renin substrate are raised, and glucosuria means glucose in the urine is present about 50%. Now come to the renal changes. Renal pelvis is dilated, ureters are dilated, especially right side. Bladder की tone कम हो जाती है, capacity कम हो जाती है, residual volume is increased, and chances of pyelonephritis is also increased. Generally ये UTI related complaints भी होती हैं during pregnancy, and especially during the first trimester or later months of pregnancies. Now come to the pulmonary changes. Mucosal hyperemia, subcostal angle changes, chest circumference and diameter, also raised diaphragmatic exertion, demand बढ़ जाती है ऑक्सीजन की. तो all these changes are to maintain that only if mother की भी demand है and fetus की भी. So POT is increased and PCO2 is decreased. Tidal volume is increased by 30 to 40%. Total lung capacity is decreased by 15%. Minute ventilation is increased by 30 to 40%. And mild respiratory alkalosis is there. Now come to the GI changes. There are several GI changes. Let's start from the oral cavity. तो gums, आपने generally देखा होगा, bleeding gums is also a complaint during pregnancy. तो इसके लिए एक specific term भी आता है, that is epulis. So constipation, very common complaint. Gums become congested and spongy and may bleed on touch, or muscle tone and motility of the entire GI tract is diminished due to high progesterone levels. And acidity की problem भी common रहती है, that is due to the cardiac sphincter is relaxed, and regurgitation of acid gastric content into esophagus may produce chemical esophagitis and heartburn. And risk of peptic ulcer disease is reduced because gastric secretions are diminished and delayed emptying of stomach, and gut become atonic. That leads to ketonicity कम हो जाती है, movements कम होते हैं, तो constipation, while diminished peristalsis facilitates more absorption of food materials. तो इसका एक फायदा ये है कि उसकी मोटिलिटी कम हो जा रही है, तो एब्जॉर्प्शन के लिए टाइम या एरिया ज्यादा मिल जा रहा है, बट दिस लेड्स टू कॉन्स्टिपेशन ऑल्सो. सो एंड वेनस प्रेशर इज इंक्रीज, जैसा कि हमने पहले पिक्चर में देखा था, तो दैट मे रिजल्ट टू हेमोरॉइड्स. यू कैन सी हियर, due to hemorrhoids are enlarged veins located within the tissues of the lower portion of rectum or anus. तो ये ब्लड सप्लाई इंक्रीज होने का. स्किन चेंजेस भी हम लोग ने पहले पढ़े थे, क्लोआज्मा, स्ट्राया ग्रेविडेरम, लीनिया एल्बा, लीनिया निग्रा, वेस्कुलर स्पाइडर्स, स्किन नेवी. अब ये क्या क्या है, क्या किसी को याद है? क्लोआज्मा ग्रेविडेरम. ग्रेविडा इज रिलेटेड टू प्रेगनेंसी. ये ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में भी फर्स्ट ग्रेविडा, सेकेंड ग्रेविडा ये टर्म यूज होता है, और शॉर्ट में इसको एज एन एब्रिविएशन जी इज यूज्ड. सो ग्रेविडा इज रिलेटेड टू प्रेगनेंसी. So cloasma gravidarum, or you can say pregnancy mask, a mask like as you see in the first figure, form pigmentation around the cheeks, forehead and around eyes, and these gradually disappears after the delivery. In abdomen, linea nigra, that is brownish black pigmented area in midline stretching from xiphis sternum to the symphysis pubis. And these are probably due to the melanocyte stimulating hormones, that is hormone from anterior pituitary, and this pigmentation also disappears after delivery. And stria gravidarum, so-called stretch marks.
in earlier months of pregnancy. These are pinkish lines or stretching of various lengths and breadth, and these are basically due to the scar of tissues. Size बढ़ता है तो tissues काफी टूटते हैं, तो उसके scar के कारण होता है in the deeper layer of cutis, and later these are scars gradually heal, so it becomes pale kind of, generally in lower part of abdomen or thighs or breast. These are stria gravidarum. So called बहुत सारी ads भी आते थे कि stretch marks के लिए anti stretch marks cream and all that. These are the physiological procedures and they have some role, but it is in the deep cutis layer. So basic changes जो है वो तो होने ही है. And various other cutaneous changes like vascular spider skin nevus, as you can see in the picture, are also there. And nervous system carpal tunnel syndrome due to the compression of median nerve is most common. As you can see, the first thumb, first second finger, and the half of the ring finger is supplied by the median nerve, and due to the compression of that, tingling or loss of sensations in this area is very common. Mood swings, depression are also common. Sudden changes in mood, and in later, maybe after the delivery, these nervous system disorders results in postpartum blues or postpartum depression also in severe cases. So these are the disorders related to the nervous system. Musculoskeletal system, due to the increased load in the middle part of the skeleton, there is a compression in the lumbar area, and backache is very common complaint during pregnancy. And come to the metabolism. Due to increased need, metabolism has to be raised. It's raised by 15 to 20%. Weight gain by approximately by 12 kg. We can say generally 11 to 12 kg of weight gain is there. And here it's divided. Fetus around 3 kg, generally 3 to 3.5 kg you can say. कि अगर 12 किलो का weight gain है, तो 6 kg goes to the credit goes to the fetus and 6 kgs for the maternal changes. तो 3 से 3.5 किलो का fetus हो गया. Placenta around half kg to 650 grams. Amniotic fluid around 800 grams. Uterus about 900 grams to 1 kg. Plasma and red cells by 1450 grams. Kg, and mammary glands 405 grams, extracellular fluids, water by 1480 grams, and deposition of fat and protein by 3345 grams. So basically it's divided into 6 into C. In broad spectrum you can say 6 for fetal changes, like fetus by 3 to 3.5 kg, placenta by half to 600 grams, and amniotic fluid by 800 grams, and rest to the maternal changes. Now come to the quiz and answer me. In a normal singleton pregnancy, maternal blood volume is raised by, हम लोगों ने बात की थी अलग अलग भी कि ब्लड का वॉल्यूम इतना बढ़ता है, प्लाज्मा का इतना बढ़ता है, रेड ब्लड सेल्स का इतना बढ़ता है. किसी को याद है लास्ट स्लाइड्स में हमने अभी पढ़ा है? टोटल ब्लड वॉल्यूम, आप लोग एक बार ये स्लाइड्स फिर से देख लीजिए. ये कुछ याद आ रहा है? ब्लड वॉल्यूम कितना बढ़ रहा है स्लाइड्स में? 30%. एंड प्लाज्मा वॉल्यूम 40%.
So blood volume raised by 30% and plasma volume by 40% and RBCs by 20%. तो ये क्वेश्चन अगर नेक्स्ट टाइम आया तो